नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सीधे इस वक्त रुख करते हैं कोलकाता का, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। Conveyed to Prime Minister Nehru that, and I quote him, "No one today could claim that your handling of the Kashmir problem has enhanced our international prestige or has won for us wide international support and sympathy. On the other hand, your policy in this behalf has added to complications both at home and abroad." I repeat, your policy in this behalf has added to complications both at home and abroad. Statesmanship requires that you should re-examine the whole matter dispassionately and instead of being haunted by false internationalism, firmly create conditions for national solidarity based on fair adjustment of different views and input. I particularly stress this reference to complications abroad because that is precisely what came to preoccupy Indian diplomacy for the period thereafter. Interestingly, Sardar Patel too had a similar view when he very presciently cautioned Pandit Nehru about submitting our interest to the judgment of others. With the passage of time, the diplomatic consequences of the early misjudgments on Jammu and Kashmir have probably receded from public memory. It is possible that the younger generations are even unaware of the pressures that our country faced on this issue. But it is nevertheless worth recalling in order to fully appreciate the importance of what we did in August 2019. The question of how weaknesses are exploited in world politics and therefore why we should constantly strengthen our national security. Let me dwell on the global manipulation of the Jammu and Kashmir situation in some detail. This would explain what Dr. Mukherjee meant when he spoke of complications. Many of you would be familiar with the fact that in December 1947, India referred the matter to the United Nations under Article 35 of the UN Charter as a threat to international peace and security created by Pakistan's support to the invaders. There is a separate debate on whether this was the best pathway that India could have chosen at that time. But I won't get into that. Now bear in mind that the British appointed Governor General accepted the instrument of accession in regard to Jammu and Kashmir under the relevant legal provisions. What I would like to highlight more is the responses of the major world powers to an opening that this situation provided. Clearly, as the recent colonial power, the United Kingdom was in the lead. It was also the one with the strongest post-partition agenda and therefore the most mischievous. The UK influenced the passing of a Security Council resolution calling on both India and Pakistan to refrain from any acts that would aggravate the situation. So what you have in effect is that the aggressor and the victim are put on par. Declassified records indicate very clearly that there was a strategy in the Commonwealth Relations Office to bring in Pakistani troops into Jammu and Kashmir to balance out India. The next step was to move through Belgium, which was then the President of the Security Council, to establish a three-nation commission on the matter. Now, in that process, India's main request that Pakistan refrain from assisting the invaders was conveniently dropped. The further sleight of hand happened when the title of the resolution itself was changed from
To the India-Pakistan question, Canada then took over from Belgium and carried the Western agenda further forward by pressing for a Pakistani military presence in the place of the invaders if they withdrew. Matters, in fact, reached a stage where India actually had to threaten to leave the Commonwealth to protest against such bias. Now, as the stakes rose higher, the United States and other Western allies also got drawn deeper into this game. Intense pressures were exerted over the next few years, including the threat to withhold assistance of various kinds to India. The turning point, of course, was a 1957 UK-US joint draft by the Soviet Union. The next decade, India's defeat in the 1962 conflict with China saw a renewal of such efforts. The infamous Averell Harriman Duncan Sandys mission actually sought to arbitrate on Jammu and Kashmir, and this was the most serious of those endeavors. If they failed, it was less due to intent and more because of global circumstances and India's own resistance. The illegal 1963 China-Pakistan agreement on Shaksgam Valley made it awkward for Western nations to make common cause right then with Pakistan. But by 1965, Western partiality for Pakistan's attempt to capture Jammu and Kashmir was apparent once again in the stance that they took on the conflict. Issue moved purely to the bilateral format as a result of the Shimla Agreement. Attempts to interfere in Jammu and Kashmir nevertheless carried on. This happened publicly during the Clinton administration, and even the reaction of Western powers to our 1998 nuclear tests tried to link it to this issue. I repeat, this happened publicly during the Clinton administration, and even the reaction of Western powers to our 1998 nuclear tests tried to link it to this issue. While the Bush administration moderated this, there were nevertheless conversations behind closed doors. Barack Obama did bring up Kashmir during his presidential campaign, and there was a debate actually about Ambassador Holbrooke's remit that some of you may remember. But much more than these diplomatic endeavors, what has hurt our interests more are the actual violation of our sovereignty and territorial integrity. And that violation was by China. As I noted, this began in 1963 and kept increasing thereafter through connectivity initiatives. We later saw that develop into the so-called China-Pakistan Economic Corridor. Each of these efforts has been countered and will continue to be countered. But keeping all this in mind, we must appreciate mainstreaming Jammu and Kashmir. We have not just strengthened national integrity, but also enhanced national security. And this is absolutely vital as India raises its profile on the global stage. Certainly, our Western partners today are much more understanding. But let that not obfuscate the fact that the real change has been in our own policies in respect of Jammu and Kashmir. A question closely related to the mishandling of the Jammu and Kashmir issue is that of India's misreading of Pakistan, its intent and its policies. This too is a long-standing issue and has cast its shadow over many decades on our well-being and security. And here too, there has been a decisive shift in Indian thinking after 2014. In the case of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the matter acquires particular salience because it was the cause of his resignation from the Union Cabinet. He shares his assessment candidly with the Parliament on 19th April 1950 in words that still resonate with all of us. And he says, I quote him,
I have never felt happy about our attitude towards Pakistan. It has been weak, halting, and inconsistent. Our goodness or inaction has been interpreted as weakness by Pakistan. It has made Pakistan more and more intransigent and made us suffer all the greater, and even lowered us in the estimation of our own people. On every important occasion, we have remained on the defensive and failed to expose or counteract the designs of Pakistan aimed at us, unquote. Now ask yourself, this could well be the thoughts of the average Indian citizen in the aftermath of the 26/11 attacks in Mumbai. Indeed, if there are two figures of that era who displayed strategic clarity about Pakistan, Patel, and the other was Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Apart from the accession of Jammu and Kashmir and the treatment of minorities, about which I will speak, this was most notably on display where Dr. Mukherjee was concerned in regard to his own province of Bengal, and that is something, Professor Ghosh, which you pointed out. Once the concept of partitioning India was accepted by the Congress, Dr. Mukherjee put all his energies into ensuring that the metropolis of Kolkata and as much of Bengal as possible stayed with India. To that end, he convened a cross-section of what we would call influencers today and led an agitation that compelled a positive outcome. Today, we cannot even contemplate the consequence of a different result. You can only imagine what it would have meant for the conduct of our foreign policy. It is therefore natural that this is regarded as one of his great contributions, certainly by nationalist opinion in our country. While there is a larger point that Dr. Mukherjee was making with reference to our approach to Pakistan, his specific analysis of the Nehru-Liaquat Pact is also relevant for policy responses towards Pakistan. Do remember that this pact was actually the precipitating factor for his resignation. There is much that he warned about the treatment of minorities, which unfortunately came true in the decades that passed. He underlined that the pact tries to ignore the basic implications of an intolerant state, that the declared positions of the Pakistani government undermined any sense of minority security, and that was giving life to these policies. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे कोलकाता से, जहां पर विदेश मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेक्चर कार्यक्रम में बात रख रहे थे इंडिया, न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत और नई दुनिया किस प्रकार से स्थिति है, और विदेश नीति को लेकर खास तौर से उन्होंने बात का जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी शरद मुदगल मेरे साथ हैं। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि इसने 100 वर्षों में अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है।
अब छात्रों को ये बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान के महत्व को पर जोर देते हुए कहा कि जिसके पास ज्ञान है वही सुखी और बलवान है। हमारे यहां कहा जाता है ज्ञानवानेन सुखवान, ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव बलवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की सवारी कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने आम यात्रियों की तरह मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान कई यात्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी वो मेट्रो से ही वापस अपने गंतव्य को पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा नेता अमित शाह ने आज राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। भाजपा नेता अमित शाह ने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो नज़ारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है कि 2023 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत बिना मतलब इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हें इस सभा का वीडियो भेज दें, असलियत उनको पता चल जाएगी। आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया। इस जनसभा के दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल गौरव और विकास के साल रहे हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने पूरे देश और राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता की भी बात कही। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाजपा नेता अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए थे।
21 पार्टी के लोग शामिल हुए थे। 21 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए। 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले, घोटाले। जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए मित्रों, एक भी आरोप। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा आपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। केंद्र सरकार ने देश की सभी 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में यूपीआई से भुगतान की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 15 अगस्त 2023 तक राज्य के प्रत्येक पंचायत में डिजिटल भुगतान, खासतौर पर राजस्व संग्रह शुरू करने और इसे समारोह के रूप में घोषित करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार गांवों के विकास के साथ ही पंचायतों को पारदर्शी बनाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट शुरू किया जा चुका है। इंटरनेट सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। ई ग्राम स्वराज का अभियान चल रहा है। अब इसी कड़ी में देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल मोड पर पूरी तरह से ले जाने के लिए भी पंचायतों को साथ लिया जा रहा है। यदि सभी पंचायतों में ये व्यवस्था लागू हो गई तो भारत का डिजिटल भुगतान का आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर बड़ा फैसला ले सकती है। यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने समान नागरिक संहिता पर कहा कि कानून एवं न्याय समिति के अधिकार क्षेत्र में पर्सनल लॉ आते हैं। लॉ कमीशन के विमर्श पर कमेटी चर्चा करेगी और इस चर्चा के दौरान सभी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। इस बैठक का किसी भी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी, उस पर कमेटी चर्चा करेगी और सभी पार्टी के लोग रहेंगे। तो इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर चर्चा होगी कमेटी के अंदर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए समिति की अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग श्रेणी के लोगों और संस्थाओं से इस पर विचार विमर्श किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई ने आश्वस्त किया है कि ये ड्राफ्ट सभी के हित में है। That the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना है। The Hindu Code Bill is there now since more than 7 decades. It is equally applicable to Hindus, to Sikhs, to Jains, to Buddhists. Has that been able to create uniformity among them all?
not even among Hindus. The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76 लाभार्थियों को प्रयागराज के लूकरगंज में बने फ्लैट्स की चाबियां सौंपी हैं। ये जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई और अब इस पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले फ्लैट्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जमीन पर फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा 2021 में की थी। उसके बाद आज इन घरों को दिया गया। राजधानी दिल्ली में अपने घर का सपना संजोए लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आज से डीडीए की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। डीडीए ने बीते दिनों इस योजना को स्वीकृति दी थी। इसके तहत डीडीए के 5,540 फ्लैट्स का विवरण किया गया है, जिसमें जसोला, द्वारका और नरेला, लोकनायकपुरम, रोहिणी और सिरसपुर के फ्लैट शामिल हैं। आवेदन के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।